Hello everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansaar. I am Pooja Soni from CA Sansaar, and today our video is about identification of NPA in bank branch audit. For this discussion, we have our wonderful speaker CA Vivek Khurana sir. A warm welcome to you sir, and thank you for joining us and giving us your valuable time. Now, before starting the discussion, my request for all of you to please like our video and subscribe to our YouTube channel CA Sansaar, and also hit the bell icon so that you will get all the latest updates. So back to the topic. Sir, we have received many calls and messages regarding the case study. Can you please guide us over it? Thank you very much, Pooja ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CA Sansaar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on another important topic. Yes, regarding today we will discuss about the case studies because in our earlier recordings we had discussed on many topics regarding the advances, then the IRAC norm, identification of NPS, and even our last webinar we had discussed about the bank branch audit in the CBS environment. So today we will discuss with the example. I will give you some case studies and you have to answer it. Either you can send the answer at my WhatsApp number or you can also put into the comment box. So let's see कि व्हाट्स द बेनिफिट कि हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं सीए संसार टीम या मेरे को भी बुला लेते हैं अल्टरनेट डेज पे तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस एटलीस्ट आर यू पीपल आर अवेयर हाउ टू आइडेंटिफाई द एनपीएस तो लेट्स सी बाय द पीपीटी यस So regarding the bank branch audit, identification of NPS, before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed to be the views of the any other person or any other authority. Please don't take it any legal advice, legal opinion, professional advice, or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all the viewers, please kindly go through the RBI notification, bank circular, bank notification, ICAI guidance note, etc. So regarding now we'll discuss about the identification of NPS through case studies one by one. So first is I'm giving you the example. If in case of a loan, let's example, it's a term loan. Due date of a term loan is March 31st, 2024, and full dues are not received before the lending institution run the day end process for this date, then the date of overdue shall be the March 31st, 2024. चलो ये भी मैंने बता दिया, otherwise ये भी आपको बताना था when it's overdue, because many times I told you regarding the RBI circular day end process. So in this case, when will be the NPA? क्लियर कि अगर आपका अकाउंट ओवर ड्यू है 31 मार्च 2024 को तो किस डेट को ये अकाउंट एनपीए होगा इन केस ऑफ टर्म लोन. डोंट थिंक अबाउट द सीसीआरओडी, ओनली जस्ट टेल मी अबाउट द टर्म लोन. मेरे को आई नीड द डेट. डोंट राइट कि मई में, अप्रैल में, जून में, नथिंग, एग्जैक्ट डेट. रिमेंबर दिस थिंग many times. Even RBI asked the members कि please identify the NPA on the calendar dates. आपको मंथ में नहीं कैलकुलेट करना, कैलेंडर डेट्स में आपको कैलकुलेट करना है. तो दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी. द नेक्स्ट केस स्टडी, इन केस ए टर्म लोन, कोई टर्म लोन है and 4 EMIs overdue as on November 2024, and subsequently there is a partial recovery in the account. However, two installments have always remained overdue for the rest of period till March 2025. So now tell me whether, because 4 EMI dues थी November 2024 में, फिर उसमें कुछ partial recovery आई, but on 31st March it's two still pending. So whether it's a standard account or substandard account, means either it's a NPA or the standard account, then this is the next case study. You have to answer it. Correct? Now let's discuss another one. A term loan account has 4 EMI overdue as on November 2024, and subsequently there is the entire recovery in the account as on
20th Jan 2025. However, again, he didn't pay the two EMI in the March month of Feb and March 2025. So in this case, whether the account is NPA or whether the account is standard, you have to answer it. Again, I am saying answer into the comment box and also mention which is the case study. उसके ऊपर नंबर नहीं लिखे, आई एम सॉरी, तो शायद वो टीम ने मिस कर दिया वहां पे नंबर मेंशन करना. बट यस, यू कैन आंसर द फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड or the sixth slide. This is the I think fifth slide, and next is the sixth slide. इसमें है this case study. तो in case of a term loan, amount of loan is 6 lakh and amount of installment is 15,000 per month. ये term loan है आपका. EMI due on 5th of each month. Borrower had paid EMI till November 2024 regularly. EMI filing date on 5th November 2024. So in case whether the this one account is NPA, if it's NPA, then what's the date of NPA, and if it's the standard, then tell me exactly. Then in next case, a term loan account has 4 EMI overdues as on 31st March 2024 or 2025, and subsequently the entire overdue are recovered on 8th April 2025 before signing the balance sheet by the statutory auditor. Would this account be required to be classified as NPA or the standard? Means जैसे हम audit करने जाते हैं. Then what the manager says, सर इसकी अभी आज ही आ जाती है पेमेंट आपके साथ, अभी पेमेंट्स मंगवा देता हूँ, और वो मंगवा भी देते हैं. तो इन दिस केस वेदर दिस अकाउंट इज एनपीए आर द स्टैंडर्ड, तो इसके ऊपर भी यू हैव टू आंसर. इफ यू डोंट वांट टू आंसर, यू हैव टू सी योरसेल्फ वेदर यू कैन आंसर इट और नॉट, बिकॉज जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है इन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, वेदर यू पीपल आर अवेयर इट और नॉट, व्हाट्स द माय बेनिफिट. देन नेक्स्ट केस स्टडी जो आपकी स्लाइड्स 8 पे है, इन केस ऑफ टर्म लोन अकाउंट, डेट ऑफ सैंक्शन इज 31st December 2022 and amount of loan is 12 lakh and the amount of installment is 10,000 plus minus interest non EMI. Outstanding as on 31st March 2025 is 10 lakh 10,000 rupees. So in this case, you have to tell account is NP or not. This is very important. You forget about the interest amount. Just tell me whether this without taking the interest, whether amount is NP or not. Or second thing, if you consider जो ये आपकी 10,000 है, this is including the interest. So in this case, whether the account is NPA or not. In both the cases, you can discuss and you yourself can check कि वो account NPA है या नहीं है. And in next case study, which are on the slide number 9, a term loan account has 4 EMI overdues as on 31st March 2025 and subsequently the account is closed on 8th April 2025. So now account is closed. So now what will you do? Whether account is overdue, yeah, NPA, or whether account is closed, then no need to report. So what's your view on this? You have to answer it by the comment box, slide number 9. Then next case study. A term loan account had 4 EMI overdues as on 31st December 2024 and was accordingly marked as NPA. Subsequently, the entire overdue was recovered on 28 Feb 2025 and there are no overdue in the account. तो उस डेट उसको क्या करोगे? Whether the account is eligible for the performing assets or should it remain NPA category for the further period of 1 year? कि आप कब उसको स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे, whether on the same date या still on 31st March 2025 it's the NPA, that you have to answer slide number 10. Then in slide number 11, one term loan account was there. Borrower had paid prepaid 9 months EMI in the month of July 2024 and subsequently has not paid any amount in the credit of term loan. What would the account require to be classified as NPA on 31st March 2025? तो अगर कुछ prepaid payments कर दी उन्होंने, तो in that case, what will you do? What's your course of action as the auditor? So in this case, whether account is NPA or whether account is a standard account. Then next case study on slide number 12. Term loan
A had availed a term loan for the purchase of a car of rupees 20 lakh. He has not paid 2 month installment as on 31st March. While checking the loan file, उसने दो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी थी, बट लोन फाइल जब चेक कर रहे थे, then letter of controlling authority that it has come to the notice of the branch that car is stolen. कार ही नहीं है, कार चोरी हो गई. तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू? Whether its account is NPA या फिर it's a standard assets, what happened? Forget about the insurance. Just tell me what's your opinion as the auditor. Okay. Then in case of CCOD facility, slide number 13. Account is operated within the limit, but there are no credits in the said account since 1st Jan. Would such account be required to be classified as NPA even though it's not overdrawn for a single day? तो उसमें कोई क्रेडिट नहीं है 1st Jan से, सीसी अकाउंट है, सीसीओडी अकाउंट है और विद इन द लिमिट है, बट इन दैट केस वेदर इट्स एनपीए और नॉट. In case of CCOD facility, Mr. X is having CC limit of 6 crore with a bank and DP limit is 5 crore as on 31st December 2024. And then account in overdrawn position on from 25th December 2024 to 31st March 2025. And during the period, Mr. X has deposited a check of rupees 30 lakh to make his account within the limit as on 15 March 2025, and accordingly account is within rupees 4 crore as on 15 March 2025. So in this case, what's the account status, whether it's a NPA or whether it's a regular account, it's a standard position, that you have to answer. And take another example. If this check is bounced, जो ये check deposit करा था 15 मार्च को, next day bounce हो जाता है, and that what's your answer पे change? उसमें कुछ चेंजेस होंगे या सेम आंसर? क्लियर? दिस इज स्लाइड 14. एंड देन स्लाइड 15. Mr. X is having a CC limit of rupees 6 crore with a bank. Last stock statement submitted on 8th October 2024 specifying the detail of stock on 6th October 2024. Now what would be the NP status, whether it's a normal account, standard account, or substandard account, means NPA. See, everything I told you in previous videos, सब कुछ डिस्कस किया है हमने. सीसी लिमिट, टर्म लोन, आईरैक नोम, सब कुछ डिस्कस किया है. You have to answer now. This was slide number 15. And then if the CC limit would be only 6 lakh only, तो उस केस में कुछ आंसर आपका चेंज होगा. Then in case of a CC facility, is short reviewed twice for the period of 90 days. First from July 24 to September 24 and then October to December 24. Would the said account be classified as performing assets or the non-performing asset as on March 25? जो 31st मार्च को है उस डेट में क्या कंसीडर करोगे? You have to answer at the slide number 16. If the same is not renewed till that time, कि 31st मार्च तक अगर रिन्यू नहीं हुई तो क्या होगा आपका आंसर? Then slide number 17. CC limit is 1 crore, LC 25 lakh rupees. Bank is having system to recover term loan EMI from CC account on regular basis, and on 31st December 2024 CC balance of rupees 80 lakh, and during the period 1st January 2025 to 31st March 2025 the balance is within the limit 80 to 85 lakh only, and interest duly served by the borrower. And then LC of rupees 25 lakh devolved on 19 December 2024, and the bank kept the same in LC devolved account separately until 31st March 2025. The account is not repaid. What's the status of NPA? Very beautiful question. Most of the time, people will get it. So you have to answer slide number 17, and will ask the CA Sansaar team have some price system. जिनके आंसर ठीक है, लकी ड्रा निकालो, ज्यादा है तो, and distribute some price because motivate the members. Yes, they are giving the answers. Then slide number 18. A borrower had availed OD against property to the tune of rupees 5 crore against primary security
of immovable property of rupees 20 crore. Subsequently, the said property was subject to valuation and the present value of said property is rupees 8 crore. लोन 5 करोड़ का था, उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू 20 करोड़, वैल्यूएशन के बाद इट केम्स टू 8 करोड़. नाउ would this account be required to be classified as doubtful even though the outstanding balance is only 2 crore rupees? तो what would be your answer in this case? कि क्या करना है उसका केस का, एनपीए है, क्लासिफाइड में स्टैंडर्ड है, क्या है आपका इन स्लाइड नंबर 18. And then in slide number 19, XYZ Enterprises is a partnership firm with X, Y, and Z its partner, and the term loan account of XYZ Enterprises is marked as NPA by the bank, but the bank does not mark the housing loan availed by the partner X as the same is regular in term of repayment and is not overdue beyond 90 days. तो इस केस में क्या हम सेम थिंग करेंगे? One account becomes NPA, then the all account become the NPAs because पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट एनपीए, तो क्या सारे पार्टनर्स के अकाउंट भी एनपीए हो जाएंगे? तो यू हैव टू आंसर स्लाइड नंबर 19. देन नेक्स्ट इसी के साथ है, डज द, हाँ वही मैंने आपको बता दिया, डज द बैंक इज रिक्वायर्ड टू आल्सो मार्क द हाउसिंग लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर एक्स इज एनपीए. विल सिचुएशन चेंज will situation change if the proprietary given as security for housing loan is taken as the collateral for loan extended to the partnership firm? तो ये दो क्वेश्चन है, you have to answer slide number 19. Then next question, a large variance in case of DP of CC account observed in DP calculation as per March stock statement and as per audited financial. What as a auditor should you do in this scenario? This is also very important and practical question है कि आपको मोस्टली मिलेंगे कि आपके जो स्टॉक स्टेटमेंट आ रही है रेगुलरली फेब मार्च या जन में एंड इन द फाइनेंशियल वेरिएंस आर देयर, then what's your opinion? Yeah, what's your view on that? That you have to answer. Then next, if you people are not aware to answer, आप तब भी कमेंट करना. आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अनदर वीडियो उन जिसमें उनके साथ साथ आंसर भी मिलेंगे वेरी सुन, माइट बी आफ्टर 3 or 4 days. और एक हमारा और वेबिनार भी ड्यू है ऑन द लफार. विल ट्राई टू रिकॉर्ड फर्स्ट या 31st तक. आई एम वेरी बिजी डेली, एक दो सेमिनार्स हैं, तो विल ट्राई टू रिकॉर्ड ऑन लाइव ऑन 1st April. In case of CC account, sanction limit rupees 1 crore and DP limit assessed by the bank is rupees 1 crore. And in audit, it observed that bank had not taken into consideration for the debtors covered period and debtors margin. And as per revised detail, on the basis of sanction letter, DP limit assessment would be rupees 55 lakh rupees. And as on 31st March 2025, outstanding balance is 90 lakh and the balance is above 75 lakh throughout the year. In that case, what will we do? Whether the account is NPA, performing, regularized, out of order, that you have to answer. Then, in case slide number 22, CC limit 60 lakh, term loan 160 lakh, and then EMI of term loan, this is 2,50,000 rupees. Bank is having the system to recover term loan EMI from the CC account on regular basis, and on 31st December 2024, CC balance of rupees 60 lakh rupees. So November 22 and December 22 EMI not recovered because account fully utilized. So now bank debited the EMI in CC account on 25th March 2025, even though CC is overdrawn position. So now in this case, what's the status? Whether account is regularized, standard account है या NP account है? You have to answer slide number 22. देन स्लाइड नंबर 23, कंजोर्टियम फाइनेंस. इसके ऊपर भी कई बार हमने डिस्कस किया, लीड बैंक और आपके जो उसमें बाकी अदर बैंक्स हैं. लीड बैंक एंड ए इज द लीड बैंक, बी आवर बैंक जो ऑडिट कर रहे हो जिसकी आप ब्रांच, एंड आल्सो अदर बैंक्स आर आल्सो देयर. बोरोवर इज अंडर स्ट्रेस and unable to serve the debit on time with all the banks in consortium, but managing to pay dues of certain banks. कुछ banks को pay कर देते हैं, कुछ को नहीं करता. As on 31st December 2024, a lead bank declared the account as NPA. Also, some other banks declared account as NPA, but B continued the account as performing, mentioning that all dues of the borrower are duly recovered and no dues pending. तो इस केस में क्या करोगे? क्या ऐसा है कि कंसोर्टियम फाइनेंस में एक का एनपीए तो सारे एनपीए करेंगे? तो यू हैव टू आंसर. Already told you many times. So you have to answer slide number 29.
And in case of another question है 23, 24, Consortium Finance, a lead bank, be our bank audit wala and also other banks hai. A lead bank is exercising the activity of recovery and then transferring the share to other banks in proportionately. जो मतलब उसके पास ईवीएम आती थी आगे भेजता था. But as per audit, nothing received from the lead bank and also borrower had paid all the dues. No amount received by bank. Means जो borrower ने आपके लीड बैंक को तो सारी पेमेंट कर दी बट लीड बैंक ने आगे ट्रांसफर नहीं करी. तो इन दिस केस बोरो उसको लीड बैंक को सारी पेमेंट मिल गई है. तो वेदर इट्स एनपीए or non-NP. Slide 24, you have to answer. Then XYZ Limited CC limit 10 lakh rupees and no operation in account routinely, only interest paid in full for the quarter. As on 31st March, outstanding balance rupees 10 lakh and no overdues is there. In this case क्या होगा status of NPA. काफी आपको varieties of question मिलेंगे और same thing you will get it at the time of audit. तो इस केस में आप बताएंगे कि क्या करना है. उसमें कुछ भी ओवर ड्यूज नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है. लोन लिए, इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, दैट्स इट. अमाउंट सेम टू सेम है, ओपनिंग बैलेंस सेम, क्लोजिंग बैलेंस सेम. तो यू हैव टू आंसर स्लाइड नंबर 25. And XYZ Limited CC limit 2 crore rupees as on 31st December 2024, outstanding balance 2.02 crore, balance as on 29th March 2025 2.08 crore, all overdues cleared on 29th May from directors account. कि डायरेक्टर्स ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए सारे सारे ड्यूज. तो इन ऑडिट इट्स ऑब्जर्व दैट डायरेक्टर्स आर गिवन पर्सनल लोन बाय द सेम बैंक टू क्लियर ऑन ओवरड्यू ऑफ द कंपनी अकाउंट्स. मींस जो डायरेक्टर ने भी पेमेंट किया वो भी बैंक ने उनको लोन दिए. तो पर्सनल लोन को देके वो आपके जो डेफिशिएंसी है या ओवरड्यूज है पूरे क्लियर कर रहे हैं. तो इन दिस केस व्हाट वुड बी द स्टेटस, एनपीए या नॉर्मल अकाउंट है, दैट यू हैव टू चेक. देन एग्रीकल्चर के ऊपर ये आपको मिल जाएगा. एग्रीकल्चर के ऊपर आप एक बार चेक कर लीजिए जो हमने डिस्कस किया था. शॉर्ट टर्म क्रॉप है, लॉन्ग टर्म क्रॉप है. शॉर्ट टर्म क्रॉप में भी आपका खरीफ का सीजन है, रबी का सीजन है. तो शॉर्ट टर्म क्रॉप में आपको पता है कि मैं अभी चलो नहीं बता रहा, यू हैव टू आंसर कि सैंक्शन कब हुआ, फिर उसका हार्वेस्टिंग का पहला केस है, फिर सेकंड रबी का सेकंड केस है, शुगर कैन का थर्ड केस है एंड बनाना का फोर्थ केस है. तो इन सब केसेस में आपको पहले मिलेगा सैंक्शन डेट, सेकंड में आपके पास है हार्वेस्टिंग टाइम, फिर थर्ड में उनकी रीपेमेंट ड्यू डेट कब थी, फिर इरेगुलरिटीज कब हुई, मतलब उन्होंने जब फर्स्ट भी पेमेंट नहीं करी, फिर जो फर्स्ट क्रॉप सेशन कब था एंड हुआ उसकी डेट, सेकंड क्रॉप सेशन की डेट कब एंड हुई एंड डेट ऑफ एनपीए. आपको चारों केसेस में बताना है और स्लाइड नंबर 27 है. एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द केस ऑफ सिंगल मोनोक्रॉपिंग पैटर्न. तो उसमें डबल क्रॉपिंग पैटर्न है, यहाँ पे सिंगल. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा मल्टीपल या डबल क्रॉपिंग पैटर्न. ये आईसीआई गाइडेंस नोट में भी मिला था पहले. तो आपको सेकंड केस वो फर्स्ट था, ये सेकंड है. शॉर्ट टर्म क्रॉप में खरीफ रबी, लॉन्ग टर्म में शुगर कैन बनाना, उसमें सैंक्शन डेट मेंशन्ड है, हार्वेस्टिंग टाइम मेंशन्ड है, रीपेमेंट ड्यू डेट मेंशन्ड है, डेट ऑफ इरेगुलरिटी मेंशन्ड है एंड देन फर्स्ट क्रॉप सीजन एंड डेट है, सेकंड क्रॉप सीजन एंड डेट है एंड यू हैव टू आंसर द डेट ऑफ एनपीए. अगर आपको लग रहा है तो आप इसको स्टॉप करके यू कैन चेक द क्वेश्चन. आप उसको क्वेश्चन चेक करके अपनी स्क्रीन के ऊपर रख के देन थिंक अबाउट इट कि इस डेट को सैंक्शन था, इस डेट को रीपेमेंट थी, ये रेगुलरिटी है, अब कब पेमेंट आनी चाहिए थी, कब नहीं आई, कब वी कैन डू द एनपीए एज पर द आरबीआई जो सर्कुलर है, आईसीआई गाइडेंस नोट है, अकॉर्डिंगली, सो दैट यू पीपल कैन फाइट विद द मैनेजर. अदरवाइज वो तो हमेशा ही कहते हैं एग्रीकल्चर एडवांसेस तो कभी एनपीए नहीं होते. So that you have to check. It's I am giving this all just because of your practice. So आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए. उसमें जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट. यू हैव टू आंसर इट. और अगर बाई चांस इफ यू हैव एनी इशू तो मेरा आपके पास मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा. बट माय ओनली रिक्वेस्ट, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ओनली बिटवीन द एक जो ऑफिस टाइमिंग है आप 10 to 10 भी कर लीजिए रात को. बट ये नहीं कि रात को 12 बजे मैसेज कर रहे हो या 1 बजे मैसेज कर रहे हो. कुछ प्लीज, सबकी एक लाइफ होती है. तो आफ्टर 11 प्लीज किसी को भी ना करो. इट्स माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. और मेरी रिक्वेस्ट है सीए संसार टीम से कि आप कुछ प्राइज या कुछ इनके आंसर ठीक आते हैं तो उनके प्राइज की भी कोई स्कीम लॉन्च करिए. तो थैंक यू वेरी मच.
इसके अलावा कुछ और अगर आपके पास कोई कभी भी मैसेज आए या कुछ क्वेरी आए, तो दैट वी विल आल्सो रिकॉर्ड द वीडियो ऑन दैट। अदरवाइज लोड्स ऑफ वीडियोस आर देयर, मैनी वीडियोस, ईच एंड एवरी टॉपिक। पीछे हमने उसके ऊपर जो ऑडिट ऑफ हमने जो नॉन फंड एक्टिविटीज के ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, उससे पहले गोल्ड लोन ज्वेल लोन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया था, उससे पहले एक हमने वेबिनार भी किया था ओवरव्यू जो ऑडिट प्लानिंग्स वगैरह के ऊपर। अब जो एक और हमने पीछे किया है वेबिनार जो बैंक ब्रांच ऑडिट अंडर सीबीएस एनवायरनमेंट। तो एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू कवर। एंड नेक्स्ट वेबिनार जो हम करेंगे अगर टाइम मिला, आई विल ट्राई कि 1 अप्रैल से तक हो जाए एक वेबिनार ऑन द लफार। एंड इन दैट we will discuss close by close discussion of LAFAR with the CBS command, FlexCube command, TCS Banks command, Finacle command, everything. And I will give you the suggested audits, क्या audit करना है, and the suggested comments that you have to write into the LAFAR. आपको nil, no, not applicable mention नहीं करना. LAFAR is very very important that we will discuss. Yes, Pooja. Thank you so much, sir, for your wonderful question which you have asked. Hope we will receive lots of answer of these. And thank you so much, sir, for your valuable time. My sincere thanks to once again Team CA Sansaar for giving me this opportunity, and I am eagerly waiting for your reply. चेक करूंगा किस किस के आंसर ठीक आए हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।